एक मिथ होता है जो पूरे इंडिया में है शायद कि इफ यू स्टार्ट जिमिंग अर्ली तो तुम्हारी हाइट रुक जाती है। कुंफू पांडा में एक सीन है जिसमें वो टर्टल कहता है माय टाइम हैज कम, सो हाँ, माय अच्छा। टाइम हैज कम। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि जब तुम लायक होते हो ना तो आगे से लोग तुम्हें अप्रोच करते हैं। लोग शीशे में देखते हैं कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, मैं शीशे में देखता हूँ कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ। Today at Flow State, we have someone whose journey is very unique. He's an actor who has gained fame rapidly, and he's also titled the youngest Mr. India at just the age of 19. And we welcome Lakkshey Dedha. Thank you so much. Hi, nice to have you here. Same here, same here. How have Nice you to be here. been? I've been really great and blessed. Okay. Yeah. So I'm so curious to know about your journey, and I know that from whatever I've interacted with you, Yeah. you are a very honest person. Yeah. And so I cannot wait to get into this with you. Tell Okay. me a little bit about your journey. Okay. So जो लोग मुझे जानते हैं स्कूल से बेसिकली, so I would say no one would believe कि this guy could like act in movies or walk on ramps, because मैं बचपन से ही बहुत skinny और बहुत वो बच्चा होता है ना जिसे जो कुछ बोलता नहीं है। इवन अगर मेरी क्लास टीचर कोई लड़की पार्टनर बनाती थी तो आई यूज्ड टू सिट लाइक दिस बिकॉज लाइक आई यूज्ड टू बी सो इनसिक्योर एंड everything. But what? Insecurity about Insecure what? as in I was too shy. I was very reserved. I don't have any sibling also, so I was like the only child, and I was like very very shy and reserved kind of kid back then. And I was like very skinny also, so I have been treated like bullied because of being skinny. Anyone would just mess up with me. And of course you at that age you get crushes, and but you don't have that confidence because you know that you don't look like that, and everything happened. So So did you have a crush on someone and yeah, you had I a hard always time? always had, Tell but me, I tell me I've about never, that. I still can't like go and talk to my crushes. I know why. Okay, So yeah, but क्या हो जाएगा? What is the worst you think will happen? see, nothing would happen, but still that thing is still there. Okay. Yeah. So it was when I watched Mr. India in I think 2014, when Rohit Khandelwal won that Mr. India title. I still remember उस time Zoom पे आता था. That day was something that changed my life, because like I was like, okay, this is something that I want to become, because मैंने वो पूरा episode देखा जिसमें he was some जैसे लड़कियों में कहते हैं ना beauty with brains. He had that body, he had that personality, he had that way of talking, he had everything that dream guy would look like of someone. So I was like, okay, I want to be there, I want to be at that stage. So my journey started. I remember 10th के boards थे, and I was waiting for कि boards खत्म हो, क्योंकि एक myth होता है जो पूरे इंडिया में है शायद कि if you start gymming early तो तुम्हारी हाइट रुक जाती है. अच्छा, हाँ, I've heard this. हाँ, but ऐसा नहीं होता. That is genetic. So like my parents were like, okay, wait for just past your 10th grade and then go for gym, because I was like very passionate to start my thing. So I joined gym, and I was skinny, like very skinny, and so I started from there. And 11th में I remember एक local pageant होता था मिस्टर नॉर्थ इंडिया, तो मैंने वहाँ अप्लाई कर दिया and auditions भी clear हो गया. So basically that is these type of pageants are like not literally pageants. They take you and they give थोड़ा बहुत grooming classes. But I took that very seriously. Like I literally asked my school to give me 15 days leave. And I remember कि I had to go there 8 बजे. So वो थोड़ा दूर भी था मेरे घर से. So I told my trainer कि भाई can you open the gym at 4 so that I can go to the gym and then do this, do that and everything. So fortunately or unfortunately कुछ भी मिला नहीं मुझे उसमें. मैं top 50 में भी नहीं था. अच्छा. But that thing gave me that school में hype. Oh, this boy, he's into this, that. I was like, okay. And also I'm a guitarist from like 6 years of age. Oh wow. Yeah, I can play guitar and I can play drums and keyboards. Like I
was totally into music school time mein. That is great. Yeah. Yeah. So I was sure about one thing, that I want to do something into creative field, because I was always attracted to all this dance and this performing with band and everything. So yeah, so I used to play guitar. I was a model, so-called model at that time. School ke liye bahut hai wo model. So yeah, that gave me a hype, and I always had that vision कि okay, I want to become Mr. India. But what about like उसके बाद क्या? So I was like, ऐसा कुछ करना है कि आगे तक नाम रहे. So I believe कि young Mr. India हर कोई बनता है, हर साल बनते हैं. Like every year you have different Mr. India. But being the youngest person to become Mr. India is a different thing. So I passed the 12th grade. 12th में क्या हुआ था? I was studying for my exams, and suddenly मेरी heart beats बहुत तेज होने लगी बहुत ज़्यादा, and I felt that something was wrong with me, and I was like, okay, maybe I'm getting a heart attack or something. I ran up to my dad and was like, take me to the doctor, and आपको सच में लगा कि it's a heart attack? Yeah, I was just studying and suddenly like palpitations बहुत बढ़ गई. Dad took me to the nearest hospital, and I don't know why that doctor also said कि oh, take him to that hospital, and उसे सुन के मेरा और ज़्यादा हो गया. I was like, okay, एक कुंग फू पांडा में एक सीन है जिसमें वो टर्टल कहता है my time has come, so it's like my time has come. It was like that. But pain तो नहीं हो रहा होगा ना? No, but see, anxiety is something where your body turns your system into SOS mode. Okay, just get a help or just get it fixed. Something is wrong. Something is wrong, yeah. So at that moment, you are thinking of the worst case scenario possible. So thankfully, वहाँ पे मैं गया. So the other doctor was like wise enough to tell me कि listen, this is just your anxiety and all, you are fine. So उस time my family and the doctors and everyone thought कि you know exam वाली anxiety is something ऐसा कुछ है. But these things started repeating. So at that time my school was going really great because like I was quite famous in school and everything. And आप कहाँ पे थे? Where was your school? Of Noida, Father Agnes School, Noida. So everything was going good, and suddenly I was sitting in class and I felt like just running out of the class, but I controlled myself. I asked my teacher, can I just put my head down and sleep? And she was like, okay. And there was something I couldn't figure out how to control myself. Like my body was responding something else, and my mind was saying, okay, calm down, don't make a mess out of this. And so I remember 2-3 दिन तो मैं बस स्कूल में एक sick room होता था. I used to just go and sleep. I used to find peace in just closing my eyes or just keep playing in a dark room. So this happened. So my principal told my dad कि okay, I think you need to take him to a therapy or something. So I went to the therapist. So therapy में क्या होता था? That person, that lady used to like talk and all. तो उस time सही होता था. So as it used to like उसका असर कम होता था, तो again that things started happening. So at a stage I was so anxious कि मुझे नहाते हुए बाथरूम का गेट लगाने से भी डर लगता था. क्यों? Like, I don't know why, but that was अकेले रहना, the fact कि अकेला, आपको अकेले हाँ, रहना and it was a time when it was a time, and this is जब मुझे पता चला, तो this is also a symptom when things like when anxiety or depression is like has reached to a stage, then you start getting suicidal thoughts. तो वो मुझे इतना ज़्यादा trigger नहीं हुआ, लेकिन एक thought आता था कि what if I do this, what if I do that. Okay. So therapy से नहीं हुआ. So that lady asked me to go to a doctor, like a psychiatrist. So psychiatrist के पास गया, तो that was the husband of that lady. And then I don't know why, but doctors are meant to save lives. But he was earning money out of me. Like he used to give me tons of medicines that used to cost like thousands of rupees and all. And they were not really working. Like I had to
increase my visit to that doctor slowly. It was a psychiatrist. साइकेट्रिस्ट सो एट द एंड हमारा एक फैमिली डॉक्टर है जो मेरी दादी और मेरे डैड को ट्रीट करता है, तो हम उसके पास गए एंड देन वी गॉट टू नो दैट out of 7-8 medicine there was like only one medicine that was useful for me and rest were multivitamins, this that. And then he like gave me a medicine that made me stable, a bit stable, and things started getting back to track. So for like 1 month or so I stopped everything. I used to be the person who was crazy to go to the gym because I had my thing, okay, I have to go to the gym. Being a skinny guy, when you start feeling good and looking good, you are like, okay, I have to go. मैंने सब छोड़ दिया था. I turned out to be even more skinny and everything. सब खराब हो गया था. Slowly जैसे medicines work करने लगी, I again started my thing. I again went to the gym and everything, and then boards came. 12th boards. Yeah, 12th boards, and thankfully I scored really good in that because I was really interested in the subjects. एक और ये चीज़ होती है कि I don't know why 10th में when we are like asked to select subjects, I don't know why people just sometimes there is like, oh इसने science लिया तो I have to go to science or this लिए. So I believe कि if you have interest in something, you won't need to put so much efforts that I've seen like people taking so much of pressure and going to 10 tuitions and पूरा दिन tuitions में. I don't know why, but my things went well. I scored really good and finally I was in a very good college of Delhi University. So Delhi University में things changed. इस time पे I had all the liberty to work on myself. So I remember I used to carry my tiffins along with me and I used to watch a lot of modeling videos and different kind of stuff, and then I joined T-Series Stageworks. So Okay. there is a place in Noida called Film City, तो वहाँ पे एक T-Series का studio है. So there is a person, there's a very big supermodel, Jatin Khirbat. So he used to groom there. So that guy is the one who has changed my life. Okay. He groomed me totally. He has turned me into a totally different person. And his way was really different. Before the reality hits you, everyone thinks that they are something. So I remember जब मैंने वो course start ही करा था, so within 2 weeks he sent me for an audition. एक रोहित बल का, like रोहित बल is very big designer, yeah. I've heard, yeah. So उसके audition पे भेजा and मैं ready होके गया. And जब मैंने वहाँ का crowd देखा, I was like, okay, now I know where कितना काम करना है मुझे. So after that I worked on myself and things went well. So उसके बाद things वो थोड़ी sorted हो गई मिस्टर इंडिया के लिए. फिर मिस्टर इंडिया हुआ, पहली बार में मुझसे नहीं हुआ क्लियर. So second time I tried and वो चीज़ क्लियर हो गई. And also because कॉलेज का मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम मैंने अपने आप को दिया था, like grooming myself, my diet and everything and all. You used to not go for parties Classes, and no parties, no classes, socializing. and also, honestly no classes as well because I was very sure कि मुझे करना क्या है. So and I knew कि I don't think I would need this thing to like that would help me in Work for that. you. Yeah. But for the sake of family, for just the degree thing, I just did that. So and thankfully मेरे college में कोई attendance problem नहीं थी. So it was good for me. So I remember college जाता भी था तो मैं tiffin लेके जाता था. Like उस time पे in the college life you are more into going to different cafes, exploring places and everything. And I used to carry a tiffin. Your healthy food. Healthy food, I remember. But that paid me at that time. So college में कॉलेज की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. भगत सिंह कॉलेज था तो उसमें मैंने अप्लाई करा था एंड मेरा हो भी गया था. एंड आई डोंट नो व्हाई उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था किसी वजह से. आई स्टिल डिडंट गेट दैट रीजन. सो वील कीप दिस स्टोरी असाइड एंड वील गेट बैक आगे से. या सो जब मैं मिस्टर इंडिया बना, सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ क्या थी जब मैं वहाँ गया मिस्टर इंडिया सब कंटेस्ट के लिए कि सब मुझसे बड़े थे
और सबकी obviously maturity level था and they have better bodies and everything. I was quite insecure. So things went well, but the thing that made me the winner was my mind, my brain, my answer. And I'm very thankful to a lady called Rita Gangwani. Okay. So she's the one who has trained Manushri Childer for Miss World. Yeah. And she has like literally groomed more than 80, 90 pageant winners, and she has that Limca record, world record for grooming the most winners. Oh, wow. Yeah. So I believe she's a wonder woman. Like she is more of a therapist and a second mom, and she groomed me for Mr. India and everything, and because of her my answer was so well. Itna acha tha mera. What was her mechanism? Like what was special about her that she was doing so well? Oh, she? Haan. Yeah, okay. So she is she's also something like this, the youngest Mr. India. So she's the smallest, like the height में सबसे छोटी Lieutenant General of Indian Army. Okay. Yeah. Okay. And also she is grooming, and she can read faces. She can do many things. Okay. She can read tarot and everything. Okay, interesting. Yeah. So उन्होंने क्या बोला आपको आपके बारे में initially? Initially, I went there for grooming. So उस time पे इतना bond नहीं था that she used to. Yeah, no. So she used to support me a lot. I till now, even whenever I'm feeling low, I call her and I talk to her like for hours, and I feel fine. So Mr. India के जीतने के बाद things really changed for me. I started getting work. People started taking me seriously, and of course वो थोड़ा level change हो जाता है. I started getting work and everything, and उस time पे I was dating a girl, and that school वाला fame thing came here again. So मतलब? School वाला जैसे था ना कि I was like a guitarist and this and that, and So people that knew me. gave That you came in advantage? college. Yeah. हाँ. That came in college, and people started knowing me. People college में मैं second year में था, and मुझे दूसरे college as a guest बुलाते थे. Oh, Yeah. Nice. Yeah, even my that girlfriend's college called me as a judge in her college. That's why you met her? No. I met her in a college level fashion show. जैसे college की fashion societies होती है ना, तो first year में I joined that because I was Trying much to yeah. it. So that way. So things were going really well. जैसे भगत सिंह का बताया था. So I still remember Bhagat Singh College ने भी मुझे बुलाया था as a guest, but they didn't remember. They rejected me sometime, and that principal was like, "Oh, how are you? We are so glad to meet you." This and Did that. you tell them? No, I didn't. But I was like, "Oh, got you." Yeah. What do you think कि आप पहले वहाँ से reject हुए और आप जो पहले top 50 में भी नहीं आए थे for the North, उसके बाद भी you kept going, you went to Mr. India. Generally people get so discouraged and they are like चलो maybe because वो age भी ऐसी होती है ना कि हम थोड़े discouraged ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं. Why do you think what kept you going despite all of that? For me, the best thing about what I felt is I always see rejections as a fuel. As a fuel. Yeah, if someone rejects me, I'm like, okay, I'll come back, but in a different way. जैसे मुझे top 50 में नहीं करा, it's like, okay, I'll come as a judge. College ने reject करा, I'll come as this. Amazing. So this is my mindset. Like, I make sure that when I return at this place, I'll be someone. So ये चीज़ मेरा बहुत strong part रहा है, and also like being जैसे मैंने बताया, like in my childhood I was like very skinny guy and this and everything bad. So that thing gave me a confidence, like if I have come from there to here, so why not आगे? I'm sure. Yeah. That makes sense. Yeah. And also like people don't understand that, you know, the reason you don't win is maybe at that moment you are not good enough. So instead of thinking that you are not good enough, you should start working on yourself to make yourself that good, right? So I got this thing very early in life because I started बहुत पहले. So now comes the interesting story. Yeah. So I never thought of coming to Bombay. I never thought of being an actor. So this ये Mr. India हुआ.
everything was going well. I have a friend जो मेरे साथ nursery class से है. So we were going to a party, and I had a model friend. So उसके सामने he says कि she was saying कि I want to go to Bombay and pursue acting, and then my friend says कि oh, I have a cousin brother who can help you out and who has a very good connection in an agency XYZ, and and that agency was so big. I was like, bro, like I'm your brother. Why didn't you tell me this? Yeah. And he was like, oh, I'll make you meet him and all and all. And I was like, okay. So he made me meet him. So पहले तो मैंने उसका Instagram देखा था, and उसका Instagram इतना convincing था that कोई भी देखता ना, he would be like, oh, he's so into Bollywood and he's so like very close to all the stars and everyone. So he made me meet him, and he was like कि ये मेरा बचपन से दोस्त है, and help him out, and he was like हाँ I'll help him out and all. So वो एक दिन के लिए मुझे बॉम्बे लाया to meet that agency. मुझे एजेंसी ने सिलेक्ट नहीं करा था, but he didn't tell me that. So after the agency meeting, we went to a actor's home. I was sitting in the Uber only. वो ऊपर गया. And he calls me from there, and he was like कि भाई को तेरी फोटोज बहुत पसंद आई, तो मूवी करेगा तू? I was like, come on, like from Delhi to a normal guy from Delhi, वो गांव का लड़का जिसने कभी ऐसे नहीं देखा. और आप तो एक्टिंग के बारे में सोच भी नहीं रहे थे. कभी नहीं सोचा था. So I was like भाई बिल्कुल. So he was like कि बाल बढ़ाने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे. I was like okay. So मैं घर गया, and I told my dad this happened, ये और वो, and he's like that वो जो मेरा दोस्त का cousin था, उसने कहा कि you have to move to Bombay, you have to learn acting, this and that, and मैं सब कुछ छोड़ के आ गया. मैंने यहाँ पे शुरू करी. मैंने उस दौरान कोई डर नहीं लगा उस समय कि नहीं, I'm going to Bombay? डर मुश्किलें बहुत आई, क्योंकि जैसे मैंने बताया being a single child and you like घर पे रहा हूँ हमेशा, so adjusting to everything and हर चीज़ खुद से करना, that was a thing, but that guy also used to live with me. आता जाता रहता था, and तो things were going fine, but along with that he used to ask for money कि भाई तुझे Instagram पे काम करना पड़ेगा, तुझे इस पे काम करना पड़ेगा. If you have to be a star, you have to be this, you have to be that. Act like a star. Whatever, जो भी कि इस पे पैसा लगाना पड़ेगा, उस पे पैसा लगाना पड़ेगा. मैंने 9-10 महीने शिद्दत से मेहनत करी, शिद्दत से. सुबह 9 बजे उठता था, 9 बजे मेरी क्लास होती थी, तो मैं उठता 6 बजे था, 7 बजे जिम जाके 8 बजे आके नहा के क्लास जाता था, फिर शाम को आके स्नैक लेके दोबारा जिम जाता था फॉर द कार्डियो, फिर रात को डांस क्लास होती थी 10 से 11, फिर सोता था. फिर यही एक साइकिल चलता रहा 9 से 10 महीने. एंड और आपने उस समय बाकी दुनिया सब कुछ गायब था. सब कुछ आई वाज वेरी फोकस्ड एंड वेरी लाइक इनटू द थिंग कि करना है. एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पे मेरा सारा हुलिया भी बदल गया था, बिकॉज आई वाजंट लाइक कीपिंग लाइक मेंटेनिंग माई सेल्फ, बिकॉज वो एक्टिंग और डांस और पूरे दिन जाता है, तो अपना ख्याल नहीं रख रहा था. 10 महीने बाद मेरी उस बंदे से कुछ किसी बात पे लड़ाई हुई, किसी पैसे की बात पे, एंड आई गेट टू नो कि ऐसा कुछ भी नहीं था. देयर इज नो मूवी, देयर इज नथिंग. व्हाट? देयर इज नथिंग एट ऑल. एंड हाउ, मतलब फिर तो क्यों बुलाया उसने? ही जस्ट कॉन्ड मी. उसने पैसे लेता रहा, एंड देयर वाज नथिंग एट ऑल. ना इंस्टाग्राम, ना कुछ भी नहीं था. एंड आई वुड टेल यू कि उस टाइम 12th ग्रेड में जब मेरा अच्छे मार्क्स आए थे, तो माई ग्रैंड डैड गिफ्टेड मी अ कार कि मेरा लड़का उससे कार से जाएगा कॉलेज. तो आई वेंट सो क्रेजी फॉर दिस मूवी थिंग कि मैंने वो भी बेच दी थी. व्हेन ही यूज्ड टू आस्क मनी ना, मैंने कहा था कि मुझे नहीं चाहिए कार, मुझे वो बेच दो, बट इसे पैसे दो. एंड वो ऐसे ब्लैकमेल करता था कि लेकिन अगर तूने ये नहीं करा ना, तो जो पहले पैसे दिए वो भी खराब चले जाएंगे. सो फंसा लिया था. तो अब मुश्किल ये थी कि मैं दिल्ली में पूरे दोस्त परिवार सबको बोल के आया था मैं मूवी करने जा रहा हूँ. अब मूवी थी नहीं. सो आई स्टिल रिमेंबर यहाँ DN नगर में
गुरुद्वारा है एक. आई यूज टू गो देयर एंड आई यूज टू सिट फॉर आवर्स एंड आई यूज टू जस्ट टेल गॉड कि मुझे रास्ता दिखाओ. तो 10 दिन के बाद मुझे एक ख्याल आया कि यार देख, ईदर यू गो बैक दिल्ली एंड बिकम अनदर अनसक्सेसफुल स्टोरी ऑफ बॉम्बे, जो कहते हैं ना बॉम्बे जाके बर्बाद हो गया टाइप, या तो इस चीज़ को रियल बना. देन आई स्टार्टेड माई एंटायर जर्नी फ्रॉम द स्क्रैच. मैंने पोर्टफोलियो कराया दोबारा, मैंने एजेंसीज को भेजना शुरू करा, ये करा, हर चीज़ करी. तो मतलब इस फ्रॉम मूविंग टू बॉम्बे और टू दिस एक मतलब 1-1.5 साल हो गया था करते करते. तो 1-1.5 साल मेरे कितने पास. साल के थे आप तब? 21. सो इस दौरान मुझे कोई काम नहीं मिला था. ऑफ कोर्स काम नहीं मिला था उस टाइम पे, बिकॉज आई यूज टू लाइक पे हिम सो मच, उस बंदे को. माई डैड ऑल्सो लाइक वो भी डेप्ट में आ गए थे. ठीक है. इट वॉज अ वेरी डार्क फेज बिकॉज आई मूव्ड हियर एंड आई यूज टू फॉलो दैट गाय ब्लाइंडली. तो माई गर्लफ्रेंड ऑल्सो डम्प मी, सो इट वॉज लाइक रॉक बॉटम स्टफ. Like my dad was like running out of money, I wasn't getting work, my girlfriend dumped me, so it was like totally khatam 1.5 साल. So when you suddenly don't get work and you see everyone is working, you feel really bad. I used to, मैं हर रोज ये सोचता था कि मे बी कल बेहतर होगा, मे बी कल, ऐसे कल करते करते 1.5 साल हो गए, बट नहीं हुआ एक भी काम. मतलब मैं कहता था मैं फ्री में कर लूँगा, टेस्ट शूट कर दो, मुझे फ्री में करा दो, मैं कर लूँगा, बट नहीं मिलता था. तो मैंने दोबारा कराया, पोर्टफोलियो फ्रॉम द स्क्रैच कराया. मैंने एजेंसीज को भेजना शुरू करा. फिर एक एजेंसी ने मुझे लिया, अडोर ने. अडोर वाज माय हेल्पिंग हैंड उस टाइम, सो दे गॉट मी गुड वर्क. एक दोस्त से थोड़ा मुझे सहारा लगा. फिर मुझे मूवी मिली कैसे, मैं सारे प्रोडक्शन हाउसेस को अपनी फोटोज भेजता था, क्योंकि नाउ आई वाज ट्रेन्ड एक्टर. आई वाज ट्रेन्ड नाउ. और वो 9 मंथ जो आपने मेहनत करी, हाँ, उसका फायदा तो आपने लिया है ना. हाँ, आई लर्नड अ लॉट. सो मैं भेजता था एंड वहाँ से एक जगह से रिस्पॉन्स आया, तो उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया, डायरेक्टर ने. एंड मैं मोनोलॉग सब तैयार करके गया था. तो द डायरेक्टर ही वाज सिटिंग एंड आधा पौना घंटा मेरी बात हुई उनसे. एंड जो भी बात हुई ना, उसमें एक भी चीज़ एक्टिंग से रिलेटेड ही नहीं थी. उन्होंने जनरल नॉलेज पूछी मुझसे, दुनिया भर की पॉलिटिक्स, ये वो, तुम्हारा क्या टेक है इस पे, और पर्सनालिटी गेज करने की. या सो इन द एंड आई वाज लाइक कि सर एक्टिंग, सो ही वाज लाइक कि एक्टिंग में निकलवा लूंगा तुझसे, बट मैं नहीं चाहता था मेरा एक्टर डम हो, जिसे पता ही ना हो दुनिया में क्या चल रहा है. सो आई वाज लाइक ओके. एंड आफ्टर फ्यू डेज आई गॉट दैट कॉल कि ओके यू आर लॉग्ड फॉर दिस. आई वाज लाइक Yay, locked for this. Yeah, so that जिस चीज़ से मैं पागल बन के आया था, वो चीज़ रियल हो गई थी. उसके बाद मूवी करी मैंने, एंड मूवी के बाद बहुत चीज़ें चेंज हुई. आई स्टिल रिमेंबर ऐसे बहुत टेक्स्ट थे जो मैंने 2017 या 2018 में मैंने भेजे हुए थे बड़े बड़े डिज़ाइनर्स और प्रोडक्शन को, कैन आई हैव योर ईमेल, आई वांट टू सेंड माय प्रोफाइल. वो रिप्लाई आए मुझे 2021 में. सो I was like okay, I was very sure. उस दिन मुझे एक चीज़ समझ में आई कि of course उन्होंने वो स्क्रॉल बैक करके नहीं देखा होगा अपने मैसेजेस 2017 में किस किस ने भेजे हैं. तो उस दिन मुझे समझ में आया कि जब तुम लायक होते हो ना, तो आगे से लोग तुम्हें अप्रोच करते हैं. सो वो सारी साइकिल मुझे समझ में आई कि क्यों मुझे काम नहीं मिला, क्यों मैं नहीं हो पा रहा था, वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी. दूसरी सबसे अच्छी बात ये हुई, अनदर द विनिंग स्टफ, कि जब वो मूवी हुई, एक तो मूवी हो गई, मूवी के 2 महीने बाद जिस एजेंसी को वो पागल बनाने के लिए जो मुझे लाया था ना, जिस एजेंसी के लिए, दे डायरेक्टली टेक्सटेड मी कि वी वांट टू साइन यू अप. सो वो जो पागल बनाने लाया था वो भी सच हो गया. सो एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी इन माय फेवर. आपने मैनिफेस्ट किया है? मैनिफेस्ट, आई डोंट नो, मे बी आई डू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, बट आई नो बट हाउ एंड कैसे हुआ ये. बट येस, आई द थिंग दैट आई नो वाज कि मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी. आई वाज लाइक चाहे 10 साल लग जाए लेकिन मैं करूँगा ये चीज़. सो आफ्टर दैट थिंग्स टर्न्ड आउट टू बी रियली गुड, एंड यू नो आगे से रिस्पॉन्स आ रहे हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोडक्शन के रिस्पॉन्स आए. मूवी के बाद और ज़्यादा चेंज हुई, जब
यू नो आई स्टिल रिमेंबर अभी दिल्ली एयरपोर्ट गया था मैं एंड मैं ज़्यादा ऐसे कुछ तैयार होके नहीं जाता, मैं बहुत सिंपल हुडी वुडी पहन के चले जाता हूँ। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं तैयार होके गया तो वहाँ पे एक दिल्ली एयरपोर्ट का कोई स्टाफ था, तो मैं चश्मे वश्मे लगा के मस्त बन के गया एंड लाइक सर आप मूवी में काम करते हो? मैंने कहा हाँ, तो ही क्लिक्ड अ पिक्चर विद मी। उसको देख के ना 3-4 लोग और आ गए, उन्होंने खींची। आई वाज लाइक ओके थिंग्स आर Made वर्किंग it. आउट, या वी आई मेड इट। तो ये Yeah. चीजें 2-3 बार हुई है मेरे साथ। बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ वाज कि when I like my dad came here for my premiere, so बड़े बड़े नाम इंडस्ट्री के जैसे रमेश दुरानी जी, सुभाष घई सर और ये सब लोग वहाँ थे एंड everyone knew my dad as लक्ष्य के डैड, लक्ष्य के डैड। उस दिन मुझे एक और चीज़ इंटरेस्टिंग पता चली कि माई डैड वांटेड टू बी एन एक्टर। उन्होंने कॉलेज टाइम पे दूरदर्शन के किसी चीज़ के लिए ऑडिशन दिया था, बट माई ग्रैंड डैड डिडंट लेट हिम गो कि वो वहाँ मतलब कोई आसपास का गया था, वो बर्बाद हो गया था बॉम्बे में ये और वो। उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि यही चीज़ मेरे ग्रैंड डैड के साथ हुई थी। उन्होंने 1970s में पोर्टफोलियो कराया था एंड उन्होंने मुझे पोर्टफोलियो दिखाया था आफ्टर माय मूवी व्हेन थिंग्स वर लाइक ओके सॉर्टेड। तो ही शोड मी कि देख क्रिएटिविटी तो थी आपकी फैमिली में, फैमिली में थी, या एवरीवन वांटेड, बट देखो चाहता हर कोई है लेकिन करेज चाहिए होता है, करेज। सो करेज, मे बी दैट थर्ड जनरेशन गॉट दैट एंड थिंग्स हैपेंड। So you were 19 when you won Mr. India, right? And इतनी जल्दी 21, अभी आप you're still 24, you're very young right now. You've done so much work and इतना कुछ आया है आपकी तरफ, you know, अचानक से after hitting rock bottom, suddenly you had such a hike. So आपको डर लगता है कभी-कभी कि ये सब चला जाएगा या कुछ कभी? यार मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे अपनी जर्नी की लगती है कि मैंने रिजेक्शंस बहुत फेस करी है। तो इवन अगर आप पिन को एक जगह हिट करते रहोगे ना, तो एक टाइम पे वो दर्द होना बंद हो जाता है। तो रिजेक्शंस और ये सब ना मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि यार जैसे मेरी एंजाइटी वाला टाइम था जब मैंने सब छोड़ दिया था, देन दिस 1.5 ईयर जब मेरे पास कुछ नहीं था, इफ आई हैव सर्वाइव्ड दिस मच तो आई कैन सर्वाइव एनीथिंग। हाँ कुछ भी नहीं, सब हो सकता है। सो देयर इज नो फियर। सबसे अच्छी बात उस 1.5 साल की ये थी कि दैट टॉट मी पेशेंस। मुझ में इतना पेशेंस आ गया। लाइक आई हैव सीन पीपल की काम करते हैं, 1 हफ्ता काम नहीं आया, ऑडिशन नहीं आया, दे गो क्रेजी। एंड यस लाइक व्हेन समवन टॉक्स अबाउट बॉम्बे तो वो बहुत नेगेटिव चीज़ आती है, लाइक व्हाट मीडिया शोज दिस ड्रग्स, दिस पार्टी एंड दिस कास्टिंग काउच एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक कि लाइक whoever is thinking to come here, सबसे बड़ी चीज़ उनके पास होनी चाहिए पेशेंस। इफ़ यू आर नॉट पेशेंट एंड यू गेट डेस्परेट इज जब होता है व्हेन यू गो टू अ रॉन्ग पाथ कि कुछ भी कर लूँगा मुझे काम दे दो, बट दिस डजंट हैपन। अगर कुछ भी करके काम मिलेगा, 1 बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, बट तुम्हें तीसरी बार कोई नहीं सिलेक्ट करेगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट आई डू वन थिंग कि लोग शीशे में देखते हैं कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, मैं शीशे में देखता हूँ कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ। डू दैट। Okay. So what are some ways you think we can make a difference and collectively लोगों की mental health improve करने के लिए कोई steps जो हम ले सकते हैं आपके हिसाब से? Steps, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि whenever you feel someone is acting different or you know एक वो सडन बिहेवियर चेंज होता है और वो इतना ज़्यादा एविडेंट होता है, और नेवर एवर गिव दिस एडवाइस कि खुश रहा कर। सबसे ये मैंने बहुत सुना है। सो आई बिलीव दैट कि ये खुश रहने से कुछ नहीं होता। और जो लोग बोलते हैं कि ज़्यादा लोड मत लिया कर, हाँ ज़्यादा लोड कैसे ना लो, मतलब इट्स नॉट इन योर। जैसे सदगुरु ने एक बार कहा था कि जैसे लोग कहते हैं ना कि लोड ना लिया कर, उसने किसी ने उनसे पूछा कि हाउ should I stop thinking of something? So Sadhguru says कि अच्छा don't think of monkeys. And you will think of it. Yeah, तुम्हें monkeys दिखने लगेंगे. Yeah. Right. So this is the same thing. I think कि जैसे it's not about only mental health. जैसे लोग क्या होते हैं, even if the skin is like pimple हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, लोग prescribe कर देते हैं, अरे ये face wash यूज कर, ये कर, वो कर।
but there are people to treat that. So similarly for mental health, there are people to treat that. And आज के time में इतना accessible है हर चीज़. You can easily find good doctors everywhere, therapists and everything, and you can easily save lives. Right. Yeah. So people should. What are the other things? I think that is enough, and I think people should share. Like जैसे मेरा है, I don't feel shame in saying कि I have such. ये हमेशा से issues. ऐसे ही था आपका कि आपने डेवलप किया ओवर टाइम? ये this telling all this? नहीं, मतलब people do feel shame. I Yeah, think yeah. shame is a very big. Yeah. This thing helped one of my friends. So she developed anxiety after me, like I think in college life. So I knew how to handle that. So that helped her a lot to recover. Because she was like, okay, there is someone, and there is someone who is understanding how am I feeling. So I think, you know, being a helping hand, if you have faced such thing, would make a very big difference in someone's life. Yeah. Yeah. Okay, Lakshay, that was a very, very nice conversation. And I just have to say that I love how clear you are. Yeah. You know, there's so much clarity in your thought, and बहुत आसानी से आपकी बात समझ में आ जाती है. And that is really inspiring for me. Thank you so much. So thank you for being here with Thank you us. so much. It was Thank you. lovely to have Lakshay at Flow State. Same here. Do Thank watch you. this. This is going to be a nice one. Thank you.